A very good morning, student. Today I will teach you subject English and the topic is use of I am and you are. Today I will explain you where you have to use I am and you are word and how to pronounce it. First, we use am with I only. The word am is only used with I. For example, I am a girl. मैं एक लड़की हूँ. I am a good girl. मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ. As you can see, the am word is only pronounced with I. We use are with you and many person or thing. The word you is only used with the are only. For example, you are a boy. तुम एक लड़के हो. You are going to study. तुम अब पढ़ने जाओगे. I hope you understand the concept of I am and you are. You have to learn. Now we will study subject GK, means general knowledge, and the topic is cartoon world. As you love to see cartoons on television or a movie, here are some cartoons. The first cartoon is Doraemon. Second is Donald Duck. Third, Popeye. Fourth, Ninja Hattori. Fifth, Tom and Jerry. Sixth, Chota Bheem. Seventh, Mickey Mouse. Eighth, Spider-Man. And last is Mowgli. Now we will study some cartoon names in Spanish. First, Doraemon. 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 Second, Donald Duck. Donald. Donald Duck. 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 Third, Popeye. Pop. Ieyei. Fourth, Ninja Hattori. Ninja. Ninja Hattori. 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 Fifth, Tom and Jerry. Tom. And Jerry. 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 Sixth, Chota Bheem. Chhata. Chota. Chota Bheem. Bheem. Seventh, Mickey Mouse. Mickey. Mickey Mouse. 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 Eighth, Spider-Man. Spider. Spider. Man. Ninth, Mowgli. Mowgli. Now you have to write these 9 cartoon names in your notebook and learn it also. Now we will study subject maths and the topic is comparison of number. Today we will study comparison of number in before, between and after. What is before? Before means pehle, and between means बीच में, and after means बाद में. As you can see, 3 pictures here: the apple, an apple, pencil, a ball. Apple is before the pencil. Pencil से पहले apple है, तो हम इसे कहेंगे before the pencil is apple. After, a ball. Ball is after the pencil. Ball क्या है? Pencil के बाद में है. And the pencil is between the apple and ball. Pencil क्या है? Apple और ball के बीच में है. That's why we have to say between word. Okay? I hope you understand the concept of before, between and after. Now we will do some sums
related with before. Write the numbers that comes just before. Here are some numbers we have to write just before the numbers. Let me start with 18. 18. What comes before 18? 17. So we will write here 17. What comes before 9? 8. What comes before 3 is 2. What comes before 13 is 12. What comes before 4? 3. 20 before 19. 6 before is 5. 2 before is 1. 15 before is 14. 7 before is 6. 5 before is 4. And 17 before is 16. Now you have to write these sums in your notebook and learn it also. आज हमें एक ही मात्रा में कोष्ठक में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। आपको ये 3 स्थान खाली दिख रही है। इन 3 स्थानों में से उन ब्रैकेट में से एक शब्द छांट के लिखने हैं। फर्स्ट है नैना का भैया डैश लाया। ब्रैकेट में क्या लिखा है? कैमरा और लिखा है एक अटैची। दोनों शब्द सही है। नैना का भैया कैमरा लाया, ये शब्द भी सही है। नैना का भैया डैश लाया, अटैची लाया, दोनों शब्द सही है और दोनों शब्द में एक ही मात्रा भी लगी हुई है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक शब्द लिख सकते हो, दोनों ऐसे शब्द सही है। तो मैं यहाँ कैमरा लिखती हूँ। कैमरा में आती मात्रा कैमरा। सैयद एक कुशल डैश है, डकैत या तैराक। तैराक तैराक क्या होता है? तैराक उसे कहते हैं जिसको स्विमिंग अच्छी तरह से आती हो। भैरव आज डैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है? सवेया। सवेया या भेजनाथ। भेजनाथ अब आपको ये 3 शब्द, 3 ये लाइन आपको कॉपी में लिखनी है और लर्न भी करना है।